Hello, class 9. This is your next part of your chapter, The Lost Child. Till here, till the last video, the boy has reached to that sweet shop. Okay, so after that sweet shop, he went to a shop where there was a flower seller and he hawked a garland of gulmohar. So स्वीट शॉप के बाद में अब वो फ्लावर सेलर की शॉप पे गया जहाँ पे फ्लावर सेलर जो था वो गार्लेंड ऑफ गुलमोहर के लिए शाउट कर रहा था एंड गार्लेंड मीन्स माला. सो दिस चाइल्ड ही अगेन गॉट अट्रैक्टेड टू दैट garland of gulmohar and then he said that I want that flower garland of flower, but he knew that his parents would refuse to it because they will say that those are very cheap. So with आंसर का वेट करने से पहले ही moved on. Then there was a man, he was standing with a pole with so many colors of balloon, and again this boy got attracted to that balloons. Of course all children like balloons, so now his desire was to buy it. So still he knew that his parents are going to say no for the balloons because they will say that he is too old to play with such toys. So again वो आगे चला गया. Then what he saw snake charmer, सपेरा जैसे कहते हैं, and he was playing a flute. I hope you all know that snakes are deaf, उनके कान नहीं होते हैं, and with the movement of that flute they move. Okay, so this snake charmer was playing a flute and this snake which was coiled, you all know snake coil करके बैठे रहते हैं, and because of that sound and the movement of that flute this snake raised his head, and वो इस तरह से head किया था जैसे लग रहा था कि एक swan का head है. And then he knew that his parents are going to say no again, but because वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव था तो स्नेक चार्मर के थोड़ा सा पास चला गया. बट स्टिल वो जानता था कि अगर मैं इसके लिए भी रोकूंगा कुछ कहूँगा तो पेरेंट्स नो कहेंगे, तो और उनके पेरेंट्स ने मना भी किया था इसे स्नेक्स के पास में नहीं जाना है. सो वो वहाँ से भी आगे बढ़ गया. देन वॉट ही सॉ अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. यू नो वो झूला जो गोल गोल घूमता है, दैट इज़ अ राउंड अबाउट. सो he saw that, and all the people who were there in that roundabout were shouting, cheering, having laugh, they were crying. You know, जब इस झूले में जाओ तो पहले तो बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट जब वो नीचे आने लगता है तो यू कैन फील समथिंग इन योर स्टमक एंड देन वी शाउट ऑल्सो. सो बट ये सारा कुछ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिंग था कि इस बार जो चाइल्ड था हमारा ये ही वॉज वेरी बोल्ड now, and he requested that I want to go on this roundabout, please father and mother. So वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम एकदम डट के बोला कि नहीं मुझे तो जाना है इस roundabout में, and he said please father mother I want to go to that roundabout. And as soon as he said this there was no reply, कोई reply नहीं आया. Then he turned to look to his parents, but वहाँ पे उसके parents थे नहीं. वो आगे पीछे गया, थोड़ा पीछे जाके देखा, आगे गया, लेफ्ट राइट, बट देयर वाज नो साइन ऑफ देम. इट मीन्स नाउ दैट दिस बॉय इज़ लॉस्ट. सो what you will do if you find yourself in that condition, you will start crying. So exactly वही होता है. This boy started crying and he was in fear and he was a little bit afraid also that he got lost in this fair. So बहुत अच्छी तरीके से टीयर्स बहने लग गए उसके आईज से, एंड पैनिक करने लग गया कि कहाँ जाऊँ. एंड एवरीवेयर ही वॉज शाउटिंग फॉर हिज मदर एंड फादर. थोड़ा सा भागते भागते गिरने भी लग गया, एंड उसके कपड़े जो थे पूरे मडी हो गए. एंड ही वॉज वेयरिंग अ येलो कलर टर्बन, पगड़ी वो भी खुल के गिर गई थी. एंड बहुत ज़्यादा जब रोल हो तो आँख थोड़ी सी धुंधली हो जाती बिकॉज ऑफ द टीयर्स एंड ऑल. सो विद दैट फिल्मी आइज ही वॉज सीइंग ऑल दैट मैन विमेन टॉकिंग लाफिंग एवरीथिंग. बट अभी क्या है, अभी तो वो सिर्फ और सिर्फ रो रहा है, एंड ही इज़ जस्ट सर्चिंग हिज पेरेंट्स.
वो जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हुआ गया, बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, तो और वहाँ पे बहुत क्राउड था। सो वो जो बड़े बड़े लोग थे उनके पैर के बीच से भी कभी उसे लग जा रही थी, कभी उनके पैर के बीच से निकल रहा था, बट ही वॉज सर्चिंग एवरीवेयर. Then he reached to entrance of a temple, and he saw there were too many people everywhere, and he got knocked out because of that brutal movement. वो सब इतना चल रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, तो उसकी वजह से वो काफ़ी बार गिर गया, उसे काफ़ी चोट भी लग गई थी. And then when he reached there, he started shouting with highest pitch, father, mother. And in that crowd a man was there, and he stopped and saw that there was a boy who was crying and shouting for his parents. So he went and lifted him up in his arms, अपने गोद में उठा लिया. And then he asked him, how did you get here, कैसे आ गए तुम यहाँ पे, किसके बच्चे हो तुम, who are your parents. And जैसे उसने ये सारी चीज़ें बोली, वो और रोने लग गया. So he was just saying one thing, I want my father, I want my mother. So this man, he tried to soothe him by taking him to that roundabout. वो फिर अब क्या किया, उसे चुप कराने के लिए, उसे बहलाने के लिए उस राउंडाबाउट के पास ले गया, उसी झूले के पास, कि क्या तुम इसमें झूलना चाहोगे. सो उसने आराम से पूछा, बट दिस बॉय, नाउ व्हाट हैपन्स, हिज डिज़ायर्स हैव वैनिश्ड, उसके डिज़ायर्स अब मर चुके हैं. नाउ ही ओनली नीड हिज पेरेंट्स, अब सिर्फ पेरेंट्स चाहिए. सो उसके डिज़ायर जो पहले थे वो सब के सब वैनिश हो चुके हैं, और अब उसकी सिर्फ नीड्स है, वो भी his parents. So when he reached that roundabout, he has no interest in that. He only asked for his parents. He was only shouting, I want my father, I want my mother. Then what happened, this man headed toward that place where there was a snake charmer. अब वहाँ snake charmer के पास लेके गया कि शायद हो सकता है कुछ देर के लिए वो चुप हो जाए, because he was panicking and he was crying a lot. So he said, see how nice the music is, but this child, he was not at all interested. What he did, he shut his ear, अपना कान बंद कर लिया, और भी डबल पिच पे चिल्ला के बोलने लग गया, I want my father, I want my mother. Then what happened, this man thought to take him somewhere else, जहाँ उसका इंटरेस्ट लग सके, ताकि वो कुछ चुप हो सके. सो दिस मैन टुक हिम नियर दैट बलून्स. वो उस पोल के पास, वो मैन के पास गया जो बलून सेल कर रहा था. एंड ही सेड, सी हाउ मेनी कलर्स, ब्राइट कलर्स बलून्स आर देयर, सो डू यू वांट एनी ऑफ देम. बट दिस बॉय, he turned his eyes from that balloons and just shouted that I want my father, I want my mother. So वो जो हिचकियाँ लेके रोने लग गया था, बहुत देर रो लो तो नहीं हिचकियाँ आने लगती हैं. So in that way he was crying and he was just asking for his father and mother. So अब I already told you that now his desires have vanished. His only needs is his father and mother. Okay, so next thing what happened, that this man, he was trying to make the child happy. So what he did, he took him to that flower seller, और वहाँ पे जाके बोला कि can you smell the fragrance. So this boy, he asked this boy that would you like a garland to put around your neck. उसने पूछा वो जो माला है तुम्हें मैं दूँ, क्या तुम उस पर नेक में पहनना चाहोगे, सी कितनी अच्छी स्मेल आ रही है. But what does the boy do? He turned his nose away from that basket जिसमें सारे flowers रखे थे, and then he started again crying and asking for his father and mother. So then where he took him to that sweet meat seller. वहाँ पे लेके गया और उसने स्वीट शॉप पे जाके बोला कि what sweet would you like, child, he asked. But the child turned his face from that sweet shop. वही स्वीट शॉप जहाँ पे वो जाके बर्फ़ी ख़रीदना चाहता था, बिकॉज दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. अब उसी जगह पे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था, उसके डिज़ायर्स वैनिश हो चुके थे. एंड देन अगेन व्हाट ही शाउटेड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. सो द ओनली नीड of this boy was his father and mother. His desires have been vanished. Whatever interest he had before have been vanished. Now he doesn't want all those sweet flowers, balloons, even that roundabout ride. He doesn't want anything. He just wants his father and mother.
As you all know, parents are everything to us, and he was a very small boy, so for him also it's same. Okay, so this is basically the summary of this chapter. And I see, you can see that it's written by Mulk Raj Anand, and there are certain question and answers given here, and the answers to all these questions you have to do in an essay way. अब छोटे छोटे आंसर्स नहीं लिखा जाता है, and that I will tell you, don't worry for that. And if you can use your net, you can see there are certain question and answers given. You can search for them. NCERT books are available on internet. You can search for them and see how these answers are written, so it will be easier. Okay, so that was only the summary of this chapter. Take care and bye bye.